So this is now problem number 2. If you see the configuration of this problem, it is exactly the same geometry, A, B, C, AB 20 feet, BC 20 feet. In AB span, again, we have a pointed load at mid span 20 kip, and BC fully UDL 1.5 kip per foot. Now, the problem here is that it is involving rotation at A, which is 0.002 radians in clockwise direction. Here in the figure below, you can see that rotation in the clockwise direction, 0.002. This rotates by, support A rotates by 0.002 radians. Support B settles down by this 0.75 inch, 3/4 inches, it settles down. And support C also settles down, but by amount this 1 inch. So this is 1 inch settlement there. The structure is statically indeterminate to 2 degrees, involving now displacements at all the 3 supports locations. So you can draw quickly now this situation, and then we go after the analysis. So abhi aap isko draw kar le. I am giving you a couple of minutes. You draw it quickly. E is given, it is 30,000 KSI, I is 800 inches square. Now, as displacements are involved, so we will be using the actual values of EI. So EI, it is coming 1566.6 kip foot square. 30,000 multiplied by this 800 and then divided by 144. So you can get this number, EI value. सर ड्रा हो गया Dry हो गया, अच्छा, now we can continue. Okay. Now, if you see, we are going with the same scheme now, AR1, AR2, the vertical reactions at B and C in the downward direction. Initially, we want to pick them our redundant actions. So AR1, AR2 are becoming unknowns. Now, in this case, DRS, if you see, corresponding to AR1, we were having a displacement in the downward direction, 0.75 inch. At C, we were having a displacement of 1 inch. Those are corresponding to the AR values. So we declare them now as our DRS1 and DRS2 values. As we will be using the kip and feet unit, so 0.75 divided by 12. This will give you 0.0625 feet, and 1 divided by 12, it is giving 0.0833 feet. So DRS1 and DRS2, now we have determined these values. Instead of 0, 0, now we have these numbers. Any question now how we make the DRS matrix?
Is there any question? No, sir. No, sir. अच्छा, बी पे सेटलमेंट का और सी पे सेटलमेंट का वो इफेक्ट तो आपने इंक्लूड कर दिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम अब कहाँ पे, ए पे जो रोटेशन हो रहा है उसका इफेक्ट अभी तक इसमें शामिल नहीं हुआ. दैट इज नाउ द इनडायरेक्ट इफेक्ट, इसका हम शामिल करेंगे. वो कैसे करेंगे? दैट विल बी कमिंग एज एन इनडायरेक्ट लोडिंग नाउ. तो उसका इफेक्ट हम करेंगे शामिल डीआरएल मैट्रिक्स में. ना डायरेक्ट जो आ रहा था वो डीआरएस में शामिल हो गया. इनडायरेक्ट जो है सपोर्ट सेटलमेंट्स या रोटेशंस, उसको हम करेंगे एज ए इनडायरेक्ट लोडिंग. नाउ इसका इफेक्ट हम शामिल करेंगे. Now this is the basic determinant structure. Now remove all the loads and redundant constraints to get the primary structure. तो B और C पे आप देख रहे हैं कि we don't see any redundant actions, वो रिमूव हो गए. A पे केवल आपका फिक्स सपोर्ट हो गया, so cantilever structure which is always a determinant or release structure, ये हो गया. Next, now we want, अब यहाँ पे आपका DRL मैट्रिक्स जो होगा वो दो चीजों से होगा. One will be because of the application of the actual applied loads, जो कि हमने प्रॉब्लम 1 में किया हुआ था. And next will be because of the rotation, the indirect loading, जो कि rotation आपका सपोर्ट A पे हो रहा है, उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है आपका AR1 और AR2 की जगह, तो वो आपका हो जाएगा सेकंड पार्ट ऑफ द DRL मैट्रिक्स. तो एक को जो कि एक्चुअल लोड्स की वजह से आ रहा है, इसको हम कहेंगे DRL प्राइम, और जो इनडायरेक्ट लोडिंग जो कि रोटेशन उसकी वजह से उसको DRL डबल प्राइम हम कहेंगे. तो पहले इन ऑर्डर टू कंप्यूट दीज DRL वैल्यूज हम क्या कहते हैं, ड्यू टू डायरेक्ट अप्लाइड लोड्स हम कर लेते हैं, और इसी को हम कहेंगे DRL प्राइम. ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है प्रॉब्लम नंबर 1 में, एंड इट इज द सेम थिंग नाउ. सो आई विल बी क्विकली रनिंग ओवर दीज कैलकुलेशंस. ये आपका एम और ई आई डायग्राम उसी तरह हो गया, दिस वन, ठीक है, कॉन्जुगेट बीम हो गया, और दिस इज लोडेड विद एम और ई आई डायग्राम. कॉन्जुगेट बीम लोडेड विद और एम और ई आई, एग्जैक्टली वही चीज है. सो क्या आ रहा था, दिस वाज कमिंग 156685, लेकिन ई आई वैल्यू है हमारे पास अभी, तो हम इसको वही ई आई वैल्यू से डिवाइड कर लेते हैं. वी मेक द कैलकुलेशंस. तो DRL1 प्राइम और DRL2 प्राइम हमारा आ रहा है 0.94 feet and 2.6 feet. This is DRL1 prime and DRL2 prime, which is because of the actually applied loads. Actual applied loads की वजह से जो आ रहा है. अब आते हैं रोटेशन 8. यहाँ पे A पे जो हो रहा था क्लॉकवाइज रोटेशन, ये रोटेट करेगा from this orange color, it is coming to the red location after having this 0.002 radians. तो ये क्या है, ये जो आपका ओरिजिनल बीम जो कि रेड लाइन से शो हो रहा है, ये कहाँ पे आएगा, दिस विल कम टू दिस वाइट लोकेशन. अब ऑलरेडी आपके पास है रिलेशन के थीटा को हम लेंथ और डिस्प्लेसमेंट है आर थीटा, वो रिलेशन है आपके पास, ठीक है. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. तो DRL1 डबल प्राइम किस चीज के बराबर होगा, इट विल बी L टाइम्स थीटा. L क्या है यहाँ पे, दिस वाज 20 फीट, सो 20 टाइम्स थीटा, तो 0.002 टाइम्स, तो 0.04 फीट यहाँ पे आपका DRL1 डबल प्राइम, यहाँ पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन. DRL2 इसके लिए क्या है, L आप ये पूरा लेंथ जो कि 40 फीट है हमारे पास, थीटा है ऑलरेडी हमारे पास 0.002, so this will become 0.002 times this length which is 40, 0.08. so DRL1 डबल प्राइम और DRL2 डबल प्राइम भी हमारे पास आ गया. अब नेट क्या होगा DRL हमारे पास, हम DRL1 प्राइम DRL1 डबल प्राइम जमा करेंगे तो आपका DRL1 मैट्रिक्स बन जाएगा. तो 0.94 plus 0.04, it is 0.98, and DRL2 prime plus DRL2 double prime, it is 2.68. This is because of the actual load, this is because of the rotation. Now when we sum them up, so this is coming 2.78. So we have taken now the effect of the rotation also at support A, which is included as indirect loading. Now
DRL matrix is complete now. After this, we can come now and we can generate this flexibility coefficient matrix. तो पहले कॉलम के लिए हम क्या करेंगे? To generate the first column of the flexibility coefficient corresponding to AR1, we are going to apply this one. ये हो गया, and then corresponding to AR2 यहाँ पे हो गया, and this way already we have done this in problem number 1, exactly the same thing now. Here you can see for detailed calculation see problem 1. ये already हमने किया हुआ है, and this is now the same flexibility coefficient matrix. And this is here now the actual EI is involved, so we can find out the product of these numbers, and this is now coming the actual flexibility coefficient values. After this, we solve now the compatibility equation now. Already है हमारे पास flexibility coefficient DRS, ये देखें आप, पहले में हमारे था पहले problem में these were 0 0 values, but now we have the values involved now, the actual values, because of that 0.75 inch at B settlement and 1 inch at point C settlement, we have these numbers. यहाँ पे point miss हो रहा है, so you need to put a point here also. ये हो गया DRL1 और DRL2 हमने मालूम किया हुआ है, DRL1 प्राइम और DRL1 डबल प्राइम उन वैल्यू से, तो वो नंबर्स आ रहे हैं. When we solve this, so now AR1 and AR2 now they are becoming minus 23. If you remember, it was minus 29, and this was something I don't remember right now, but this was also something maybe lesser than this number. But this is now minus 23.15, and this is minus 13.66. After this, now we go, and here now we have reversed the direction of AR1. We have reversed the direction of AR2, and we have put them on this sketch now. Now, matrix approach we are applying now to find out rest of the member interactions. तो ये वही हो गया. Let's we are selecting now AM1, 2, 3, 4. Already हमने किया हुआ है कि AML कितना आएगा, ये settlement effects already we have included in the calculations of the AR values, so you don't need to worry any further for those involvement. ये हो गया आपका AR1. ये already हमने for detail you can see problem number 1 किस तरह आ रहे हैं ये numbers. Similarly, first column of the AMR, ये किस तरह आ रहा है? Again, you need to go to the first, वहाँ पे हमने क्या हुआ है? Second column, again, problem number 1, you can go and you can find out these values. After this now, we write this equation. Equation हो गया, AML values भी है, AMR values भी है, और ये AR values हमने मालूम किए हुए. Matrix operation कर ले, and you get all the member indexes. Member indexes आ गए हमारे पास. यहाँ पे आप लगा लें, and after this you complete your shear force and bending moment diagram. इससे आप बना सकते हैं अपना shear force और bending moment diagram. Any question? Your class activity now, you need to now complete the shear force and bending moment diagram. इससे आप बना लें. Can you do it? Excuse me, sir, I have a question. Okay. सर ये हमने जो रोटेशन और सेटलमेंट्स अलग अलग कंसिडर की हैं, तो क्या ये इस रोटेशन की वजह से सेटलमेंट आई है या ये अलग से आई है? नहीं, ये तो अलग से है ना, इंडिपेंडेंट है. ओके सर. Right, this is in addition to that one. Locally it can settle down because of some foundation defect or anything, it can settle down. Similarly, you can have settlement at sea also. इसकी वजह से जो हम यहाँ पे मालूम कर रहे हैं, that is ADL1 double prime, और उसकी वजह से जो आ रहा है, अगर ये रोटेट करेगा, so then the effect is going to be there 0.04 feet या जो भी आ रहा था. Okay, any other thing? Okay, now what is the time? It is 12:08 now.
Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay, now let's go again the same problem we are taking, but now what we do at B, instead of a rigid support, what we apply a flexible support, which is having some stiffness. And you can see how much is the S1, it is 15 kip per foot. And at C, we have S2, which is 10 kip per foot. So stiffness of the spring is given, right? Where you can see this kind of support, where springs are involved. What happens now in case, let's say you are using a penthouse on the roof, you are now installing a generator. So if you put this against a rigid surface, what will happen? It will cause vibration in the floor now. Now, to eliminate or to minimize those vibrations, what we do, we put springs. Sometimes people, if springs are not available, they put tires under the generator just to minimize those vibrational effects. So this beam at B, it is supported by spring having stiffness 15 kip per foot, and at C now, it is supported by a spring with stiffness 10 kip per foot. These stiffnesses are given for these supports now. Rest, the geometry and loading is the same as we were having in problem number 1. Again, E is 30,000 KSI and I is 800 inches to the power 4. EI you can calculate. Kip feet units we will be using, so that is why EI is also written in the kip feet unit. Again, the vertical reaction at B and C, we are declaring that as our redundant action. It's 2 degrees indeterminate problem. Remember, the DRL matrix is going to be the same as we found in problem number 1. The flexibility matrix now is going to be modified because of the springs involvement. What will be F11 now? Remember, this spring will be affecting only that particular now location. It means at B, only F11 element is going to be affected. It is not going to affect F21. F21 will be 0. So F11, very easily we can find out the spring effect now. If it is 15, that will become 1 divided by 15 of the flexibility coefficient. Similarly, at C now, which is the second location, so F22 will be getting affected now. It will add up whatever we have from the this original structure now. So F22, its effect will be added, and that will become 1 divided by 10. So when we get to the flexibility coefficient matrix construction or generation, we will discuss this. Now let's now go and first we describe our redundants AR1, AR2. You can see again in the downward direction. Why I'm doing this? Because I'll be referring you back to the problem number 1 now. I don't want to go again towards these calculations. AR1, AR2, now you see with question marks. Both are unknowns at this stage. DRS1 and DRS2, again 0 and 0. The spring effects we will be taking in the flexibility coefficient matrix now. So no pre-settlements are given at B and C now. So DRS1 and DRS2, they are becoming our 0, 0. DRS1 and DRS2, you can see the footnote also, are the initial support settlements corresponding to the redundant actions, which are 0 in this case. Next, now we go and we find out the DRL matrix. DRL matrix आप कैसे जिस तरह हमने problem number 1 में किया होता है, exactly the same way. Conjugate beam loaded with M over EI diagram, then finding out the corresponding moments corresponding to the AR1 and AR2. तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं. These are the DRL1 and DRL2 values now. And as EI value now numbers we have, so we divide this and 0.94 and 2.68. These are coming DRL1 and DRL2 values. Next, now flexibility coefficient. So here we see now it's the same now structure corresponding to AR1. 1 kip load is we are applying. And this is
Now, release structure acted upon by the unit load corresponding to 2. Already हमने problem 1 में किया हुआ था, problem 2 में हमने refer किया problem 1 की तरफ. So this is the same way. So this is now, ये आप देख रहे हैं. But now how we include the effect of those springs now? Springs हमारे लगे हुए थे कहाँ पे? 1 location पे और 2 पे. पहले stiffness क्या है? It is 1 divided by flexibility. Our flexibility is equal to 1 divided by stiffness. तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 था उसका stiffness, तो उसी लोकेशन पे ये localized effect करेगा इसका corresponding to F11. Already जो standard है हमारा, that was this one coming from here. This was the standard flexibility matrix for the structure. But now we have springs at the support, so at that particular location now its effect will be added. So 1 by 15 F11 की जगह हो गया और F22 की जगह 1/10 effect हो गया. We are adding these two, and this is now becoming our combined flexibility coefficient matrix. Combined flexibility coefficient matrix आ गया. After this now we solve the compatibility equation. DRS भी था हमारे पास. DRS1 and DRS2, these are 0, 0, not these numbers. आप verify कर लें इसको, you find out the inverse, and DRS settlements are not involved here, so this should be 0. Somebody should verify this for me now, quickly. Faisal, are you there? Let's see. Sir, Habib is here. अच्छा अभी आप इसको नोट कर लें क्योंकि DRS जो है ना, इसका DRS हम तो 0, 0 कर रहे हैं ना यहाँ पे, because we don't have pre-settlements. ठीक है, so this one यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं ना, this is coming from problem number 2. This is not the situation, तो ये 0, 0 होना चाहिए. आप चले जल्दी से आप वेरीफाई कर लें कि this is now the flexibility coefficient matrix. This is 0 minus, और ये 2.76 जो है ना, ये भी आप वेरीफाई कर लें कि 2.76 आ रहा है कि नहीं आ रहा. ठीक है सर. ये पॉइंट और ये 2.68, तो 2.68 आना चाहिए ना इसका, राइट? जी सर बिल्कुल. ये जो है ना वही प्रॉब्लम 1 के वैल्यूज आने चाहिए यहाँ पे. जी सर. तो अभी आप वेरीफाई कर सकते हैं while we are here in the class online. है आपके पास कैलकुलेटर कैपेबल? सर मोबाइल में है, मैं ट्राई करता हूँ सर. मोबाइल से तुम्हारे ख्याल में मुश्किल होगा? एनी स्टूडेंट? हाँ जैसे कह रहा हूँ सर. चले ठीक है, आप स्टूडेंट ये वैल्यूज जो है ना -6.30 और 10.81 ये 87 ये तो सही आएंगे, लेकिन इसका देख लें कि here this only flexibility this is modified. बाकी आपका वही कंडीशन है जो प्रॉब्लम नंबर 1 का है, तो ये 0 माइनस जो आ रहा था और 0 माइनस जो आ रहा था वहां पे वही वैल्यूज होंगे आपके. इसको आप ठीक कर लें. नेक्स्ट ये हो गया स्ट्रक्चर पे आपके AR1 जो आपने फाइंड किया, AR2 जो आपने फाइंड किया, वही वैल्यूज आ गए. आफ्टर दिस ये अगर आप मेंबर एंड एक्शंस मालूम करना चाहते हैं तो वही वैल्यूज आपके आएंगी जो कि प्रॉब्लम 1 में आपने मालूम. फॉर डिटेल कैलकुलेशन सी प्रॉब्लम 1. इसी तरह AMR की वैल्यूज फॉर डिटेल कैलकुलेशन यू नीड टू गो टू प्रॉब्लम 1 नाउ, वहां से आप ये वैल्यूज उठाएंगे. Then it is simply the operation of these matrices and we get all the member and actions. We put them on these और इससे हम क्या करते हैं, shear force और bending moment diagrams हम draw करते हैं. So this completes the beam module now. अब beam module को अगर मैं summarize कर लूँ, we started with the various definitions. What is statical indeterminacy? फिर आपके जो डिफरेंट मेथड्स थे क्लासिकल, वो हमने ब्रीफली हमने डिस्कस किए.